Hello students. In this video we are going to discuss about the data structures in Pandas. So here are the three data structures we are going to use in Pandas. First of all is the series, as I have already discussed. Series is a one-dimensional structure that contains homogeneous elements, means same data type elements which are mutable. Mutable means we can modify modify the elements or modify the data. Then we have data frames. That is a two-dimensional structure and that is heterogeneous in nature. So we can say that we can store data of different type and that is also a mutable. Next one is the panel. Panel is actually not included in your curriculum. So we are just going to have an introduction of the panel. That's it. Basically, panel is a three-dimensional way of storing items. So first of all, we need to discuss about the series. So series, as I also already discussed, the one-dimensional structure, which should be of same type. That is why we call it as a homogeneous. So here you can see in this table we have name, age, designation. So this one single type of column, this column contain value of a single type. So we can call it as a series. If we consider age, age is a separate series which contain integer values. And again, name is a separate series that contain character or varchar value. So moving further, we can state that a series in Panda can be created using series method. So we can implement practically later on. So any list or dictionary data can be converted into series using this method, the series method. So while creating a series, we can create series using two methods. First of all is the dictionary method, we call it as a dict. Then we have a scalar value or a constant. First of all, we need to understand how to create an empty series. So to create an empty series, we need to follow the syntax. First of all, we need to import pandas library. Then after that, series objects is equal to pandas dot series. We need to call this function series to create an empty series. If we will not pass any kind of value in this series, definitely it will create an empty series. Okay, so this is the example. Here S1 is the series variable, this one, and dot is not supposed to be here. So here pd dot series. Series method display an empty list along with its default data type, and type method displays the series data type if we use type method along with it. Fine. And PD is an alternate name given to Panda modules. Obviously, if we import the Panda library, so definitely PD will be used to represent as an object of Panda library. So if we want to create a series with argument, then this is the syntax. Series object pandas.series. Here we need to pass the data, and here is the index is equal to idx. Listen, if we want to create any kind of series and if we are filling data in the series will be generated with the help of index. It have default index with it. If we are mentioning the index, either we are mentioning the index or not. Index is what? Index is the numerical value that displayed with their respective values. Just like if you have a serial number along with your data, like 1, 2, 3, 4, 5, 6, just to count the data and just to mark the number of the data. Let's suppose if you have your roll number in the class, so definitely your roll number is representing your position in the class. So roll number can be index value of yours. So it is like we have the default index value
along with the series. So let's move toward the program Spider so that we can just go to implement the series. So the basic series which can be created is an empty series. Students, just look here कि I have created an empty series. First of all, you need to import Pandas library, and we have created object PD. Then we created a simple S1 variable, and we just call pd.series method. This is the method from where we can create series. And here I did not pass a single argument here. So that is why we called it as an empty series. In this way, we can generate empty series. So if you want to fill the data in this series, then you need to fill it like this. So I have inserted five elements in this series. So when I am going to run this program, so you can see here in the output, along with the series, it also displays the index value of the series. So here you can see that कि series में हमारे साथ यहाँ पर index value साथ साथ में work करती हैं. हम किसी भी element को जब हमने access करना है तो we can access that element from its index value. So students, we can also generate the values of series with the help of range function. If we pass range here like this, and we pass the five elements of the series. So definitely if we implement this, so we got this kind of value. This is the index value and this is the range value. जो उसने मतलब हमने यहाँ पर 5 मेंशन की है तो उसने 0 से लेके 4 तक बाय डिफॉल्ट रेंज को इंक्लूड कर दिया एंड डेफिनेटली एज यू नो द property of range k, it will not include the highest value. It will start the value from the 0, pick the 5 elements accordingly, and it will not pick the highest range. So this is the way how we can generate the series with the help of range function. So now we are going to do a program where we can mention the index value by on. Earlier we are just going with the default index values, that is 0, 1, 2, 3 and whatever. But now we are going to generate the index by on. So how we can generate the index? So let's do the program. Here I need to import the panda, and here S1 is my series, and I have included here the value. Let's suppose it's and don't forget to mention the square brackets in between by generating a series. Now we have mentioned the values here, and now we are going to mention the index here. Index is equal to whatever index you want to give by your own choice. If I want to go with the character index, I'm having 6 values, so I need to mention 6 index values here. Now, and if we type the series, so look here, my index values have been changed. It is not picking the default value 0, 1, 2, 3, 4. It is picking the value A, B, C, D, E, F. Fine.
And just look here, it is also showing the D type, that is the data type of the series, and it is showing the data type as int64, which is the default type of series. So got it? Here how we can mention the series and how we can also mention the index value of the series. So if we want to access the single value, if we want to go with the single value of the series, so how we can implement it? So let's see, if I mention here zeroth value. Remember this thing, if we need to mention a single index value to print that value on that index, so definitely we need this. So let's see. Look, it is just showing 1 and 4 according to 0, 1, 2, 3, and here I have mentioned the third position. तो बेटा यहाँ पर एक क्वेश्चन तो रेज होता ही है, एंड आई नो यू दैट आपके मन में भी होगा कि मैम हमने तो यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू ए बी सी डी ई एफ रखी हुई है, तो आप तो यहाँ पर यहाँ न्यूमेरिक वैल्यूज दे रहे हो 0 एंड 3, सो हाउ इट इज डूइंग दिस थिंग? सो डेफिनेटली बेटा ये चीज जो है ये हम ले रहे हैं डिफॉल्ट इंडेक्स वैल्यूज पोजीशंस, डिफॉल्ट पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है? तो ये डिफॉल्ट पोजीशन जो है वो सीरीज में बाय डिफॉल्ट साथ में चलती ही चलती है, ठीक है? एंड हियर वी हैव अनदर ऑप्शन आल्सो, वी कैन मेंशन द कॉलम इन फ्रंट ऑफ द इंडेक्स पोजीशन. सो व्हाट विल दिस कॉलम विल बिहेव? अगर मैं इसको यहाँ पर इंप्लीमेंट करती हूँ तो ये देखो मेरे सामने कि यहाँ पर वन वैल्यू जो है वो सिंगल शो कर रहा है, अदर थ्री वैल्यूज इट विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग 0 to 3. मतलब यहाँ पर मैंने कुछ भी मेंशन नहीं किया, सो वी कैन मेंशन द इंडेक्स रेंज एज वेल. अगर मैं यहाँ पर 2 से लेके यहाँ पर मैं इसको 5 मेंशन कर देती हूँ तो नेचुरली वो क्या करेगा, जस्ट वेट, तो अब वो क्या करेगा, वो अब मुझे शो करेगा यहाँ से सेकंड वैल्यू से लेके मेरी फिफ्थ वैल्यू तक कौन सी वैल्यूज है. वी कैन मेंशन द रेंज लाइक दिस, ठीक है? इस चीज को हम बोलते हैं स्लाइसिंग. स्लाइसिंग समझते हो ना, कि हमने नाइफ लिया, कोई भी खाने वाली चीज ली, उसको हमने काट दिया, तो डेफिनेटली अगर हमने आगे से नहीं काटा तो बीच में से काटा तो आगे से लेके वो बीच का पार्ट हमारे पास आ जाएगा. सो अगर मैं यहाँ से आगे से ना काट के आगे की कोई वैल्यू मेंशन ना करके, ठीक है, तो उसको मैं एक एंड वैल्यू यहाँ पर दे रही हूँ, तो नेचुरली वो शुरू से लेके जो वैल्यू यहाँ पर मैंने एंड पे दी हुई है उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करेगा, ठीक है? तो लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर दे रही हूँ माइनस में वैल्यू, तो वो माइनस में क्या करेगा? अब ये देखो इसने क्या उठाया, इसने उठाया 4, 5, 6, मतलब पीछे से शुरू हो गया काउंटिंग करने के लिए. 0, 1, मतलब 0, 1, 2 एंड थर्ड, थर्ड को उसने स्किप कर दिया और ये भी तीन वैल्यूज जो है उसने उठा ली यहाँ पे. फाइन. सो दिस इज द वे हाउ द स्लाइसिंग इज वर्क, स्लाइसिंग वर्कड, ठीक है? और नेचुरली अगर यहाँ पर भी हम उसकी एंड वैल्यू देंगे तो नेचुरली वो एंड वैल्यू के हिसाब से उसको पिक करेगा, ठीक है? तो माइनस वैल्यू जो हमारी होती है दैट प्रिंट लास्ट इंडेक्स वैल्यूज बिकॉज ऑफ द नेगेटिव इंडेक्सिंग, कि वो पीछे से उसको नेगेटिव फॉर्म में इंडेक्स जो है वो पिक कर रहा है. नाउ देयर आर टू मोर थिंग्स, वन इज आई लॉग
and one is log. iLog is the indexing or selecting based on position. That is by row number and column number. It refers to the position based indexing. उसमें iLog में हम क्या करते हैं, ठीक है? Let's show you the example of iLog. मतलब इंडेक्स लोकेशन के बेसिस पे. And if we are mentioning like this, इसको डाल देते हैं for time being. So let's see location के basis पे it start with the very first position and go to the fourth. ठीक है, मतलब कि ये मेरे पास नॉर्मल एक स्लाइसिंग की तरह ही वर्क कर रहा है यहाँ पर, कि अगर मैं एक मतलब कि जो मेरी डिफॉल्ट इंडेक्स की वैल्यू है अगर मैंने उसको मेंशन करना है यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर आई लॉग यूज करूँगी. अगर मैंने अपना जो मैंने गिवन इंडेक्स वैल्यू दी है उसको अगर मैं यहाँ पर यूज करूँ, देन मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, लॉग. मतलब बेस्ड ऑन द नेम विच आई हैव गिवन टू देम. फाइन. सो यहाँ पर लोकेशन मैं यहाँ पर मेंशन करूंगी. अगर मैंने यहाँ पर लोकेशन दी है बी ई, सो हियर यू कैन सी द आउटपुट कि यहाँ पर उसने मेरी आउटपुट दी है मेरी गिवन लोकेशन के हिसाब से. फाइन.